Hello and good evening, and wishing you all a very happy Madras Day. I am Kalisaik Mukherjee and you're watching Headlines Now, an eventful day to say the least, with the public sector banks shutting down, BJP not budging from its demand of the resignation of the Prime Minister, and lots more. Before I take you into the details of these big happenings, a quick look at the headlines. Public sector banks go on a nationwide strike opposing banking reforms, normal operations in danger of being severely hit. 4 arrested from Coimbatore for the TNPSC question paper leak. BJP unmoved on its demand of Prime Minister's resignation over Colgate scam. Parliament adjourned for the second day in a row. Government presses down on Facebook and Twitter to remove inflammatory content, threatening legal action for non-compliance. Corruption caught on camera in Uttar Pradesh. SP MLA's daughters seen exchanging 500 rupee notes for father's release from jail. Supreme Court extends ban on tiger tourism, orders government to concentrate on saving the tiger. And a proud moment for India, ISRO gears itself for its 100th mission next month. Employees of public sector banks have gone on 2-day nationwide strike on Wednesday, opposing banking sector reforms and outsourcing of non-core activities affecting operations. The strike call was given by the United Forum of Bank Unions. They are protesting against bank sector reforms and unilateral implementation of the Khandelwal Committee report on human resources management in PSU banks. We would like to mention here that there are about 87,000 branches of public sector banks employing over 10 lakh people. The PSU banks, which operate 63,000 ATMs, control about 75% banking business in the country. பணம் எடுக்க முடியல அப்படினா அதுதான் ரொம்ப பாதிப்பு. ஏன்னா சப்போஸ் அர்ஜென்ட்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போனோம், அடுத்து வந்து எங்கேயாச்சும் வீட்டுக்கு அர்ஜென்ட்டாக அமௌண்ட் தேவைப்படுது அப்படின்னா ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியல. அதுதான் மெயின் பாதிப்பு. மொத்தமாக எடுத்து வச்சுருந்தோம்னா தெஃப்ட்டு போயிடும். அதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து ஏடிஎம் போட்டு வச்சுருக்கோம். அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் எடுத்து செலவு பண்ண முடியும். அக்கௌண்ட் வச்சுட்டு இருக்கிறவன் எத்தனை பேர் ஏடிஎம்மில் இருக்க போகுது? ஏடிஎம் கார்டு வச்சுட்டு இருக்கிறவனுக்கு சஃபர் ஆக மாட்டான் கேஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபர். பட் ஏதாவது எக்ஸ்பெக்டேஷன் டிடி அமௌண்ட் பணம் அந்த மாதிரி இருக்குது. இன்றைக்கி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷேர் நேற்று விற்றவன் இன்றைக்கி டெலிவரி கொடுக்க முடியாது. டெலிவரி கொடுக்கலைன்னா அந்த ஃபைனோ சார்ஜஸோ எக்ஸ்ட்ராவாக பர்ன் பண்ணணும். அதுவும் ஸ்மால் இன்வெஸ்டருக்கு டெஃபினட்டாக ஃபிங்கர் டிப்ஸ் நித்தியம் சுட்டுப்பான். இது மாதிரி பேங்க்கில் அக்கௌண்ட் வச்சுட்டா இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஃபார் ப்ரைவேட்டில் வச்சுட்டா வேறு மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம். பட் இதை விட ஒஸ்ட்டாக இருக்காது, கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். கொஞ்சம் ரெக்டிஃபை பண்ணுவாங்க. இவங்க ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு லேஸில் விட மாட்டாங்க. Hostelight, so I'll have problem like tomorrow if I have to go shopping or I have to come to class, I have to pay the fees something, I'll have problem because if the bank is striking, I cannot take the money to the ATM. சில இதில் ஏடிஎம்ல இல்லாமல் இருக்குது, இன்னொரு ஏடிஎம்ல இருக்குது. பெரிய எங்களுக்கு பண ஷார்ட்டேஜ்னால இந்த மூமெண்ட்டும் பண்ண முடியல. ஆக்சுவலாக இப்போ ஊருக்கு போய் நாங்கள் இப்போ நைட்டோட ஊருக்கு போக வேண்டியிருக்கு, பணம் தேவைப்படுது, என்னால் எடுக்க முடியல. ஏன்னா எல்லாமே நேற்று எல்லாம் ட்ராப் பண்ணிட்டாங்க. எங்களுக்கு இந்த இது தெரியலை. நாங்கள் கேஷுவலாக வந்து எடுத்து பார்த்தோம், ஆனால் எந்த விதமாக இதுவும் இல்லை. நான் 4-5 ஏடிஎம்மை போய் பார்த்தேன், எங்கேயுமே பணம் இல்லை. இப்போ நைட்டு ஊருக்கு போகணும், ரொம்ப ஒரு அன்னீசியாக ஃபீல் பண்ணுறேன். The Kudankulam protesters have become a chronic headache for the Tamil Nadu government. Today, they filed a PIL in the Apex Court stating that the Kudankulam plant cannot be refueled, while a case regarding the plant is pending in the court. The protesters further demanded that the nuclear plant should not be set up anywhere in the country and that the government should resort to alternative means. இந்த எங்களுக்கு இறை சக்தி எங்களுக்கு நிறைய இருக்குது. நாங்கள் கடவுளை நம்பியிருக்கோம். எங்களுக்கு அந்த கடவுள் வழி செய்வார். நாங்கள் எப்படி இந்த அணுவலை மூடியே தீர்வோம். எங்கள் உயிர் போனாலும் பரவாயில்ல, எங்கள் பெண்கள் இருக்கும் வரை நாங்கள் எங்கள் உயிர் போனாலும் பரவாயில்ல, எங்கள் சந்ததியை காக்க இந்த அணுவலை கட்டாயம் மூடியே தீர்வோம். The BJP, unyielding in its demand for Prime Minister Manmohan Singh's resignation, did not allow Parliament to function again today. Sources say that the party plans to continue disruptions till this week over the Colgate controversy. The National Auditor CAG had concluded that the government enabled rupees 1.86 lakh crores as windfall gains to private firms by giving them coal fields at a fraction of their market value. For 3 of the 5 years under scrutiny, the Prime Minister held direct charge of the coal ministry. Therefore, the BJP says he must accept the blame for a huge lapse and resign. The PM has said that he is waiting to explain the charges in Parliament, but the BJP says that it's not interested in a statement and it be allowed to function. Madam, with your permission, I beg to lay on the table of the House papers just against
BJP has demanded concrete action against Prime Minister Manmohan Singh over the coal scam, particularly about one report that suggested private companies made windfall gains of about $33 billion because of the underpriced sale of coal fields. BJP leader Balbir Punj pressed on strict action rather than just discussions in the parliament. Punj said that BJP and all its allies are united on this issue and want stringent action to be taken against the wrongdoers. The country as a whole, and we don't just want empty charcha, that is discussion in the two houses of parliament. People want action on solid issues of corruption. A constitutional authority like the CAG, which is a very responsible body, it has unraveled a scam running into 1,86,000 crores. And the needle of suspicion, unfortunately, points out to the highest man in the government, that the Honorable Prime Minister himself. So we want concrete action and not just empty discussion in the two houses of parliament now. We are in touch with virtually all political parties and we are trying to build up a consensus. But let me tell you one thing, NDA is one in this fight. They're not going to resign because the BJP wants him to resign. They should listen to the Prime Minister. That is the way how democracy works. If they have any problem, why can't they wait and listen to the Prime Minister? They say the government is not honest. Thomas is absolutely honest. That is what they're afraid of. Their Prime Minister will expose the whole thing. And they don't want that to happen. पार्लियामेंट का कर्तव्य है बहस करना। हम बहस करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि जो भी उन्होंने कहना है वो सदन में कहेंगे। अगर कोई बहस ही नहीं करना चाहता तो इसका मतलब ये है, एक बार किसी ने कहा था कि जिंदगी अपने बल से जी जाती है, किसी के कंधे पे जनाजा ही उठता है। तो किसी पे कंधे पे जनाजा उठाना ये विपक्ष कर रहा है, अपने बलबूते पे जिंदगी नहीं बिताना चाहता है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी फिर ये फैसला कर रही है, जैसा सुनने में आ रहा है, कि सदन नहीं चलने देना। हमने कल ही एकदम पहले और उससे पहले शुक्रवार को भी उनको स्पष्ट तौर पे कह दिया था भी किसी चीज़ पे आप चर्चा चाहते हैं, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। पहले तो वो ये कहा करते थे कि सरकार चर्चा नहीं मानती क्योंकि वो कानूनों की पालना नहीं करते थे, लेकिन अब तो हमने कहा कि सभी कानूनों को भी ढील देते हुए हम चर्चा के लिए तैयार हैं। इस कारण हम कह रहे हैं कि जो वो हमारे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, उनमें किसी ढंग का कोई सत्य नहीं है। We are not disturbing the house. The Congress regime by looting the country is disturbing the country, and that is why proceedings in the house are disturbed. Congress has no honor or any respect for any constitutional mechanism. The way they have scuttled the PAC report on 2G testifies this, and that is why we are not buying their argument that discuss, then let us go to PAC and let us then discuss what you did with PAC in case of 2G, what you are doing in JPC on the issue of 2G. So this is the Congress way of protecting the corruption. Parliamentary party has decided to continue to demand the resignation of the Prime Minister and the government. Addressing the parliamentary party, the chairman of NDA, parliamentary party, Sri Advani ji, has said that this government has become a burden on the country and it has become a kalank to the nation also. That's why it's all the more important that this government should go. There is no meaning in having any discussion or clarification from this government because this government never tried to be sincere. विपक्ष नेतागण उन्होंने कोल ब्लॉक एलोकेशन के बारे में उन्होंने मुद्दा उठाया संसद में। कल आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारा पार्टी का पूरा दल ये चर्चा करने के लिए तैयार है। बीजेपी ने चर्चा के लिए तैयार नहीं, उन्होंने पार्लियामेंट डिस्टर्ब करने के लिए, ये अच्छा नहीं है। आपको मालूम है कोल ब्लॉक एलोकेशन हमारा सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री ने अभी सरकार बनाने के बाद
ये पहले बीजेपी शासन में उन्होंने 24 कोल ब्लॉक उन्होंने दिया, बिना एप्लीकेशन लेके दिया, बिना एडवर्टाइजमेंट करके दिया। आदरणीय वाजपेयी जी उस टाइम प्रधानमंत्री था। हमारा सरकार आने के बाद अभी ये कोल ब्लॉक एलोकेशन ने एडवर्टाइजमेंट निकाल के एप्लीकेशन ला के बीजेपी कांग्रेस पार्टी को ब्लेम कर रहा है, इस कांग्रेस सरकार को ब्लेम कर रहा है, यूपीए सरकार को ब्लेम कर रहा है। ये बीजेपी का ये डबल फेस है। बीजेपी कुछ कर रहा है, कुछ बोल रहा है। अभी हम चर्चा के लिए तैयार है, आइए पूरा हम लेटर उन्होंने क्या क्या लेटर लिखा उसके आधार पर हम बात करना। Thing in a democracy when you have given uncontestable proofs against the culpability of a person, just with not having a discussion, not accepting the proposal of the Prime Minister, the government, the Treasury benches to have a detailed discussion on any topic the opposition wants. You don't want to have a discussion, but you just want a resignation. You say we'll have the discussion after the... What discussion will you have if the Prime Minister was to concede to your request? Is this the way parliamentary democracy works? टाइम का सवाल ही नहीं है। हम किस तरह से बातचीत करने से पहले हम हथियार डाल दें, हम घुटने टेक दें, हम दूसरे की बात मान लें, तो फिर बातचीत और चर्चा और संवाद की फिर आवश्यकता क्या बचती है और क्या उसका औचित्य बचता है। लोकतंत्र में सब अपनी अपनी बात कहते हैं। अगर आपकी बात को लोग नहीं स्वीकार कर रहे हैं, जनता स्वीकार करती है, सरकार स्वीकार नहीं करती, तो आपको एक मौका मिलेगा जनता का आशीर्वाद पाने का। और अगर सरकार कोई गलती करेगी तो सरकार के कान मरोड़ने के लिए जनता है। लेकिन आज हमको भी तो कुछ समझ है, हमको भी तो कुछ विश्वास हमको प्राप्त हुआ है जनता का। सबके बीच में एक राय बनाई जा रही है और एक तरह से जो अलग अलग राय थी उसको एक बनाया जा रहा है। जरूरी है कि अपोजिशन हमेशा पिछले 6-7 साल से एक रहा है, तो वो एक रहना चाहिए। रास्ता अलग अलग हो वो ठीक नहीं होगा। तो वो कोशिश कर रहे हैं सब लोग, हम लोग बात कर रहे हैं सबसे। तो जब एक राय हो जाएंगी तो अधिकांश लोगों की राय जो है वो एनडीए की राय थी कि बाइकाट करें, लेकिन बाकी लोगों की राय है कि नहीं, डिबेट में चलना चाहिए। निजी तौर पर हम भी चाहते थे कि डिबेट में, मगर चूंकि एनडीए में हम हैं तो एनडीए जो करेगा उसके अनुशासन से हम बंधे हुए हैं। तो जो बात हुई थी सबसे और जो हम लोगों का, तो वो सबसे बात की है, तो सब लोग डिबेट के ऊपर तैयार हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा बेशर्मी हो नहीं सकती। अगर भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाले चौतरफा दिखाई पड़ रहे हैं, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले, चौतरफा करप्शन है, हर ओर घोटाले, उसके बावजूद भी ये उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर घोटाले हुए हैं और इतनी बड़ी जनधन की लूट हुई है, तो जो जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री जी सीधे जिम्मेदार हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। उसको जस्टिफाई करने की, उनको जिंदाबाद लगाने की और उसके पूरी तरह से महिमा मंडित करने से मुझे लगता है कि न तो कांग्रेस का भला होने वाला है, न देश का भला होने वाला है। और मुझे जो अब दिख रहा है वो साफ दिख रहा है कि ये देश मध्यावधि चुनाव की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। 5 members of the BJP in the Joint Parliamentary Committee that is examining the 2G telecom scam walked out of a meeting today of the panel, demanding that Prime Minister Manmohan Singh and Finance Minister P. Chidambaram depose before the panel. The list of those who shall depose before the panel was expected to be finalized today. The BJP says it must include Dr. Singh and Mr. Chidambaram. It was amazing to see first-time members of Congress of Parliament almost saying you all are doing politics here. And the only, if at all, mistake which they had committed was to speak the truth. No fair investigation in the 2G will be permissible and possible by the JPC unless the Prime Minister and the Finance Minister is called, and the Secretary of the Prime Minister is called. For that to be showered these kind of abuses by first-timers, I'm sorry to say I'm also a third-time member of Parliament, was truly astounding. And apart from the fact that the expression kangaroo court was raised, the totality of the circumstances was very clear that in a way provocative, hostile atmosphere was thought to be created, apart from other consideration, leaving us no option but to walk out. Tomorrow, we'll talk to you in a structured way. If somebody has a preconceived, pre-orchestrated, premeditated game plan to walk out of the committee
and even before the proceedings play out in the committee, the game plan starts running from sources across the media space, I don't think it leaves their intentions to anybody's imagination. Yes, there was a discussion in the committee with regard to who should be summoned and who should not be summoned. Meanwhile, BJP also attacked the government for misusing CBI to help its supporters, saying the probe agency has not included the name of sacked Commonwealth Games Organizing Committee Chief Suresh Kalmadi in the charge sheet in the Queen's Baton Relay scam. Time to head in for a very short break right now. Stay tuned.